recording. प्रॉब्लम्स बड़े बड़े रहते हैं, तो इट्स नॉट दैट इज अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, अमतोल, अमतोल। ओके, स्पेक्स दो और ये चार्जिंग पे लगा दो। और में देखो, ये लैपटॉप का दोनों को बंद करो। लुक एट दैट यूलर्स मेथड, फिफ्थ यूनिट के सिलेबस में है ना। जी। Euler's method and Euler's modified method. Both we have to discuss. First of all, you can see what is Euler's method. Then easily you can understand what type of modification we have to do. Okay. So actually, I'll give you the basics for this one. Actually, what happened here is this is also called the solution of initial value problems. We are finding the solution for this one, IVP, initial value problem. It means what? The value of dy by dx will be given in our question. Suppose that is equal to dy by dx is equal to f of x comma y, a function having two variables x and y. So for this one, what happened here is in our question only, it is this one given, initial condition will be given, y of x0 is equal to y0. It means x0 value and y0 value will be given in our question only. x0 value initial value मतलब x की जीरो, x0 की वैल्यू y0 की वैल्यू क्वेश्चन में ही रहेगी. What we have to find out, to find a particular value we are asking to get. Like for example, we are going to find out the value of xn, y of xn is equal to y. इनिशियल वैल्यू लेके x0 y0 लेके xn yn फाइंड आउट करना है. सिंपल सिंपल वे में देखे तो dy by dx is equal to f of x comma y will be given in our question. उसके लिए यूलर्स फार्मूला क्या है, यूलर्स मेथड क्या है, वो भी देखिए. We can say as Euler's formula or Euler's method, both are same. Euler's method I am writing here. Euler's method. There is some small correction in this formula. That is why Euler's modified method is also there in our syllabus. So actually, what is our main question? Main formula here is yn is equal to y of xn, means the value of y at xn is equal to yn minus 1 plus h into f of xn minus 1 comma yn minus 1. आप एक काम कर लेना, एक पेपर में ये पूरे फार्मूलाज ये यूनिट में जितने भी यूज हो रहे हैं वो लिख लेना. लिख लिए तो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है. वेयर those formulas will not be given in our question ना. xn is equal to ये अपन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी यूज करें, x नॉट प्लस nh. ओके. और दिस फार्मूला कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, अच्छा एक और पॉइंट. सपोज इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इफ दिस फार्मूला कैसा वर्क करता देखें. इफ n is equal to 1, you take n is equal to 1, what is y1 becomes? Y1 means the value of y at this point x1, because we are putting n value is 1. So how the formula will become? Y naught which is there in our question, initial value, plus h into f of, if n value is 1, we will get x naught comma y naught. Correct? Similarly, if you take n value is 2, then y2 is equal to y of x2. Someone try to say is equal to y1 plus h into f of
x1 comma y1. Now if n is equal to 3, y3 is equal to y. अब आप बोलेंगे सर ये y1 y2 y3 क्यों लिख रहे हैं अपन, क्या है इसमें नेसेसरी क्या है? इट इज आस्किंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. ये फर्स्ट इनिशियल वैल्यू है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आल्सो वी आर फाइंडिंग. फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, और दो स्टेजेस अगर मैच हो गए तो फिर आपका वो एक्यूरेट सोल्यूशन वही रहता है, h इंटू एफ ऑफ x2 कामा वाई. Okay, this is our main Euler's method and Euler's formula. So now we start working. Let us see, take one question where we can also use this formula, and कैसा इसको solve करेंगे, that also we can see. Let us see one question. The question is find y of 2.2. जैसे मैं अभी आपको बोला y of xn पे yn की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फाइंड y of 2.2. Clearly here it is given using Euler's method. Using Euler's method. Using Euler's method. Using Euler's method, where dy by dx is equal to minus xy square with some initial condition will be there. Y of 2 is equal to 1. Y of 2 is equal to 1. This is your problem. Clearly क्वेश्चन में आपको दिख रहा ना, यूलर्स मेथड यूज करो बोल रहा. ओके, y of 2.2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. y of 2 is equal to 1. इनिशियल वैल्यू मतलब ये x0 पे 2 है वैल्यू, y0 पे 1 है वैल्यू. x0 y0 conditions, initial value will be given, dy by dx also given. We have to find out y of 2.2. ओके ना. अब देखेंगे अब इसका सोल्यूशन. ओके, अच्छे से देखिए और आंसर देने की कोशिश करो. गिवन dy by dx is equal to minus xy square. ओके, ये फंक्शन ऑफ x कमा y की वैल्यू है. ओके, नाउ लुक एट दैट. y of 2 is equal to 1. 2 means this is the value of x0. x0 value is 2 and y0 value will be 1, comma y0 value is 1. Now to find y of what is asking here, 2.2. This one we have to find out. मतलब ये x की वैल्यू है, ये ब्रैकेट की जो भी वैल्यू थी वो x की वैल्यू. तो मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, x 2.2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही, y की वैल्यू, ये फंक्शन y की वैल्यू 2.2 पे कितनी हो रही वो आपको कैलकुलेट करना है. अब देखो इनिशियल वैल्यू है 2. ठीक है, आपको जाना कहाँ तक है, 2.2 तक जाना है. अच्छे से देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियल वैल्यू विल बी 2 एंड द फाइनल वैल्यू वी हैव टू रीच इज 2.2. तो ये जो स्टेजेस है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने स्टेजेस में जाना चाह रहे हो वो पॉइंट तक. अगर अपन यहाँ पर अगर इसका इंटरवल अपन 0.1, तो ये 0.1 अगर लिए अपन h की वैल्यू, तो अपन दो स्टेजेस में 2.2 तक चले जाते. ठीक है, अगर आप चाहे तो एक ही स्टेज में भी जा सकते डायरेक्ट जंप करके, बट अपन जितना उसको इंटरवल में डिवाइड करेंगे ना, तो उतना आपका आंसर एक्यूरेट है. इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, दो स्टेजेस में नहीं डिवाइड करके एच को क्या कर रहे हैं बोले तो 4 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, ऐसा.
फिर से एक बार ये पॉइंट को बोलता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 2 से लेके 2.2 तक जाना है, देखिए ये इनिशियल वैल्यू है आपकी। ठीक है, 2.2 तक आपको रीच करना है। तो ये जो पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करके जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो व्हाट वी आर टेकिंग हियर इज एन वैल्यू इज टेकिंग एज 4। 2 भी कर सकते हैं आप। अब जितना ज्यादा पार्ट में इसको डिवाइड करें उतना आसान हो जाता है आपका प्रॉब्लम। h इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज b माइनस ए बाई एन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी यूज करे थे अपन। तो h इज इक्वल टू, b वैल्यू इज द इनिशियल लास्ट वैल्यू दैट इज 2.2 minus initial value is 2 divided by 4. So if you want to simplify, 2.2 minus 2 is 0.2 divided by 4. So how much it is? आप इसको कैलकुलेट करके बोलिए। 0.2 divided by 4, 0.0500. 0.05 only we take. Now xn का ये फार्मूला यूज करेंगे। xn is equals to x0 plus nh. So x starting with 1, n is equals to 1, x1 is equal to, x0 value is already here, we have 2 plus n value is 1 we are taking, h value is 0.05. So the answer will be what? 2.05। ये x1 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर अपने को जरूरत पड़ते रहती है, देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ती है x2, फिर x3, फिर x2। x2 means what do you take? x0 plus 2h, which is equal to, x0 is already 2 plus 2 into h value is 0.05. Now if you calculate, you get what? कैलकुलेट करके आप बोलो मेरे को। x3 वैल्यू, x0 plus 3h। 3.000. नहीं 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 नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं, 2 + 2 into 0.05, 3 में नहीं जाता हूँ। देखिए हाँ, 2.2 तक ही जाना है आपको। जी नहीं आता हूँ। ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। x4, 2.1. हाँ कैसा आ गया करेक्ट को, 2.1। नेक्स्ट वैल्यू, x0 plus 4h, that is 2 plus 4 into 0.05। 2.1500. 2.15 enough, and then if you multiply with 4 we'll get 2.1। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर डैशेस लिखा था ना, वो डैशेस के वैल्यू अपने को मिल गए थे। 2 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू यू विल गेट इट एज 2.05, 2.2. 2.05, 2.1, 2.15, एक ही कर देंगे। 2.15 के बाद ये 0.05 का इंटरवल अगर अपन उसमें लिए तो 4 स्टेजेस में 2 से इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करके 2.2 तक रीच कर। अब अपन यूलर्स फार्मूला यूज करके पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे 1 by 1, इजिली आंसर आ जाए। प्रॉब्लम्स बड़े रहते हैं, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। लेट अस नेक्स्ट पेज। Look at, by Euler's method, by Euler's method, the formula you have to write. By Euler's method, yn is equals to
yn is equals to yn minus 1 plus h into f of xn minus 1 comma yn minus 1. This is the formula. So now let us start first approximate value. If n is equals to 1. If n is equal to 1, what is y1? y1. This is equal to n is equal to 1 means we will get y naught plus h value is h value. Okay, next step we put f of x is 0 comma y is 0 because n is 0 here. Put the values y0. y0 की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा देखो y0 is 1. यहाँ पे दिख रहा? Yes, here look at y0 is 1 now. Yes, sir. Plus h value is 0.05 into function of x0 y0. अपना फंक्शन ये है देखिए, दिस इज आवर फंक्शन वैल्यू x माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर. जहाँ x है वहाँ x0 लगाना, जहाँ y है वहाँ y0 लगाना. तो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we get x0 minus x0 into y0 square. Again if you put their values 1 plus 0.05 into x0 value, initial value is 2 na, 2 into y0 value is 1, तो 1 square. तो ये पूरा कैलकुलेट करके बोलिए मेरे को एक आंसर आता, दैट इज y1 है. The value of y1 means the value of y at x1, that is the value of y at x1 is 2.05. 0.9. Correct, that is correct. So 0.9 is your answer. First value आ गया, n is equals to 1 रखना. Now moving next, find out if n is equals to 2. If n is equal to 2, यहाँ पे रखेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. n is equal to 2 रखते कि ये बन जाता, क्या बन जाता बोले, y2 is equal to बोले y1, मतलब 2 minus 1 is y1 plus h into f of n value 2 means x1 comma y1. This is equals to y2 is equals to y1 value we got from here. ये जो वैल्यू आई ना, ये y1 की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर क्लियरली और एक बार लिख देंगे. y1 is 0.9 here. Put here 0.9 plus h value is 0.05 into फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर x1 लगा देना फिर. ओके, लाइक दैट. माइनस x1 into y1 square which is equals to 0.9 plus 0.05 into minus x1 x1 की वैल्यू 2.05. This is minus 2.05 into y1 square. y1 we got here 0.9 का square. So then simplify and tell me. तो पूरा आप करके बोलिए. Getting this is y2 value. And the value of y at x is equal to 2 पे आ रहा है. This is y of 2.1. Then answer.
0.8170. 0.8170 correct. So we got y2 value 0.8170. Next, if n is equals to 3, if n is equals to 3, if n is equals to 3, again equation number 1 में put करेंगे, we get y3 is equals to y2 plus h into f of x2 comma y2, x2 comma y2, which is equals to y2 value we got just now 0.8170 plus h value is 0.05 into फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे x2 और ये हो गया y2 का स्क्वायर, which is equal to 0.8170 plus 0.05 into minus x2 की वैल्यू मेरे पास है 2.1, 2.1 into y2 का स्क्वायर, y2 value we got it as 0.8170, इसका स्क्वायर करके ब्रैकेट क्लोज कर, and then answer you have to tell me the answer. And what we are getting, that is the value of y, y3 we are getting, y3 we are getting the value of y at x3 आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो value of y at x3 value is 2.15 पे, and the answer will be what? 0.7469. 0.7469 put here, its value is 0.05 and directly function value minus x3 into y3 का square, this is equals to 0.7469 plus 0.05 into minus of x3, x3 is 2.15, 2.15 into y3, ये आपको आया ना 0.7469 and we square it, काम करेंगे प्रिंसिपल एंगल की, अब कैलकुलेट कर लो 0.05 into x3 2.15 minus p1 into 0.7469 square, and finally calculate what you are getting, that is the value of y4, y4 means the value of y at x4, which is equals to the value of y at x4 is, that is our requirement 2.2 0.6869. double
0.68 69. डबल फाइव आ रहा है, एक बार फिर से चेक करो। नहीं सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है, 2.15 नहीं आएगा वो, x3 है ना, 0.15। नहीं नहीं बराबर है, एक बार करिए फिर से कैलकुलेट। x3/3 बराबर, x3 वैल्यू 2.15 करेक्ट होगी। सर वही आ रहा, 0.6869. यस, 0.6869 इज करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास ही थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, आप करेक्ट है। Let me do small correction here. 0.869। तो एक बार ब्रीफ से मैं आपको ये क्वेश्चन का क्या है चल मीनिंग बोल देता हूँ, देखो। लुक एट दैट, दिस इज यूलर्स फार्मूला। मेन प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में क्या रहता, प्रॉब्लम मतलब दिस नॉट अ डिफिकल्टी। इनिशियल वैल्यू विल बी गिवन, फाइनल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। जैसा ये क्वेश्चन में है y ऑफ 2.2 वी हैव टू फाइंड आउट। स्टार्टिंग वैल्यू है 2, फाइनल वैल्यू है 2.2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इनिशियल वैल्यू है, 2.2 मतलब 2.1 उसके बाद 2.2। तो दो स्टेजेस में n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 लिए तो आंसर आ जाता। जैसा अपन 4 स्टेजेस करें ना, भी देखो 4 स्टेजेस में आंसर लाए। तो जो n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? मैं बाद में रेस करता हूँ, यहाँ लिख के देखो। ये 2 है, ये 2.2 है। तो इसको अगर अपन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2.1 फिर नेक्स्ट स्टेज में 2.2। ये जो डिस्टेंस आ रहा ना, इसको आप 0.1, 0.1 डिस्टेंस, h वैल्यू 0.1 0.1 ले लिए, तो दो स्टेजेस में n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 में आंसर खत्म हो जाता आपका। ठीक है। बट अपन क्या कर रहे हैं, कभी भी आप याद रखिए, जितना आपके पास टाइम है, टाइम लिमिटेड रहते प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास बहुत कम समय है, समझो टाइम कम है, तो इन एच वैल्यू 0.1 ले लेके दो स्टेजेस में प्रॉब्लम खत्म कर देना, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2, ऐसा यहाँ पर ये खत्म कर देना। अगर आपके पास टाइम है और आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, सो देन डिवाइड दिस वन इंटू फोर। आप 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको अपन डिवाइडेड बाई 8 भी कर सकते हैं, 2.2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 8। मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 में 2.2 तक रीच हो सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेजेस में आपके आंसर तक जाना चाह रहे हैं। ठीक है। ओके। तो अपन तो अभी अभी पहले प्रॉब्लम स्टार्टिंग करें बोल के मैं एवरेज ले लिया, ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं। n इज इक्वल टू 4 लेके 2 से लेके 2.2 तक गए। अब ये 2.2 तक जाने के लिए जो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी, वो x1 x2 x3 x4 की जरूरी थी। यहाँ पर देखिए, ये फार्मूले में अपने को x0 यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, x3, ये वैल्यूज की जरूरत है। तो पहले से अपन फाइंड आउट कर लिए। x0 तो था, x1 नहीं था, तो x1 फाइंड आउट करें। ये क्यों करें अभी आपको समझ में आया ना। x2 फाइंड आउट करें, x3 फाइंड आउट करें, x4 फाइंड आउट करें। ओके, क्योंकि आप n इज इक्वल टू 4 स्टेजेस लिए तो x4 तक करना, n इज इक्वल टू 8 लिए तो x8 तक करना, n इज इक्वल टू 2 लिए तो x2 तक ही करना बस। और वो n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 में आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये फार्मूलेज आप अच्छे से रिवाइज कर लो। ये सेम फार्मूले में मॉडिफिकेशन करके यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का फार्मूला बनता, इसी के अंदर बनता वो फार्मूला, इसी से बनता वो। ठीक है, h/2 बोल के रहता फार्मूले में। तो क्वेश्चन में अगर यूलर्स मेथड से करो बोलते हो, यूलर्स मेथड से करना है। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से करो बोलते हो, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से करना है। तो क्वेश्चन को देखते हुए आपको प्रॉब्लम का आंसर देना है। यूलर्स मेथड का क्वेश्चन था ये, तो जिसको अपन सक्सेसफुली कंप्लीट करें अभी। और थोड़ी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप, तो मैं और भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, मगर आपकी प्रैक्टिस जी सर। करे तो आपको समझ में आता, देखो नहीं तो नहीं आता समझने। प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करो।
और मैं इसको आपको कंप्लीट इसका हिंट भी देता हूँ, आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखो कैसा रहता। लुक एट दैट वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इफ यू नॉट गेट वी विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू। 3x - 1, ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख रहा हूँ, ये पास पेपर में किसी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा सो ये। ओके, बाय यूलर्स मेथड से करना है। ओके। y ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट y ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो रही बोल के पूछ रहा हूँ। y ऑफ 2 हाउ मच इट इज। तो देखिए 0 है, ये 2 है, तो अपन 0 के बाद 1 और 2 लेके खत्म कर सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप। या नहीं तो आपको उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 0 से लेके 2 तक जाने के लिए n की वैल्यू अपन 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या 4 पार्ट्स में करो या 2 पार्ट्स में करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी बोला ना मैं। तो h की वैल्यू आपको कैसा डिसाइड करना है, आप n आप खुद अपनी मर्जी से लेना। आप n इज इक्वल टू 2 स्टेजेस ले रहे तो h वैल्यू आ जाता, n इज इक्वल टू 4 भी आ जाता, n इज इक्वल टू 8 में भी आ जाता। b - a मतलब लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई कितने इंटरवल में आप डिवाइड करना चाह रहे हो। तो ये 2/8 हो गया, 1/4 हो जाता, 1/4 का मतलब 0.25। तो आपकी एच की वैल्यू आपको मिल गई 0.25, है ना। एच की वैल्यू मिल गई, आपको कितनी मिल गई, 0.25। 0.25। तो इससे आप क्या करेंगे, एक्स एन का फार्मूला यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, x0 प्लस एन एच है। तो दैट इज x1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, n इज इक्वल टू 1 रख के। x0 तो आपके पास है, ये इनिशियल वैल्यू है, देखो ये जो वैल्यू है वो x0 की है, x0 इज इक्वल टू 0। और ये जो वैल्यू है दैट इज y0, दैट इज y0 इज इक्वल टू 1। तो स्टार्ट कर दिए अपना काम, 0 प्लस n वैल्यू वी आर पुटिंग एज 1 into h value is 0.25, so if you multiply you will get 0.25 only। ठीक है, फिर आप x2 करिए, फिर x3 करिए, x4 करिए, x5 करिए, x6 करिए, x7 करिए, x8 करिए। x8 में एक वेरिफिकेशन क्या होता, यहाँ पे आप उसे जब सिंप्लीफाई करते हो यहाँ पर आपको आता 2, मतलब ये पहले 0.5 बनता, फिर 0.25 के बाद 0.5 बनता, फिर 0.75 बनता, उसके बाद 1 बनता, उसके बाद 1.25 बनता, उसके बाद 1.5 बनता, उसके बाद 1.75 बनता, फिर ये 2 बन जाता। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, पाव पाव पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं, एच को 0.25 ले लेके कर रहे हैं। उसके बाद आपको यूलर्स फार्मूला मालूम है ना, मैं लिख देता हूँ मैं। क्या है यूलर्स फार्मूला, वाई एन इज इक्वल टू y n - 1। y n - 1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x n - 1 कॉमा y n - इज द फार्मूला। तो अब किसमें कैसे स्टार्ट करते हैं आप, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं आप, n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8 में आपका आंसर आपको आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यही काम आपको यूलर्स के हर क्वेश्चन में करना है। इनिशियल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देता, फाइनल वैल्यू आपको जो है वो भी क्वेश्चन में रहती, इंटरवल अपन डिसाइड करना, मतलब h की वैल्यू अपन खुद से डिसाइड करना। अब इनको कितने पार्ट में डिवाइड करके आंसर लाना चाह रहे हैं वो आप खुद डिसाइड करना, आप जितना ज्यादा डिवाइड करेंगे उतना एक्यूरेट आपका आंसर रहेगा। आप कम पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, आप ज्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करके आपके आंसर को रीच कर। ठीक है, ओके। ये प्रोसेस तो ऐसे ही रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, 100% चेंज होते हैं। 3x - y² नहीं आता, वो कुछ भी आ सकता हूँ। वैसे ही एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर में आपको दिया था 8A का, किसका था वो क्वेश्चन, कौन से मेथड से करने का था। यूलर्स का तो नहीं था होगा, आई होप यूलर्स तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं न्यूटन रैप्सन का था। आप। हाँ अच्छी बात है, नहीं आया फिर, नहीं सर। नहीं आया, करे भी नहीं ट्राई। करिए सर।
ट्राई करेंगे। और ट्राई करें सो एक बार मेरे को फोटो भेजा, मैं देखता हूँ कितना सही है। ओके। ठीक है, तो अब ओके। आफ्टरनून में नहीं नहीं बिजी है आप आफ्टरनून में? जी सर। कल तो क्लास होना मुश्किल है, सैटरडे है ना, तो देखता हूँ मैं, अगर फिर भी अगर टाइम मिला आफ्टरनून बोल तो ले सकते हैं, नहीं बोल तो शाम में तो कल मुश्किल है, आफ्टरनून बोल तो फिर भी मैं ले ओके। सकता आफ्टरनून 3 o'clock। हूँ। 3 o'clock, हाँ 3 o'clock 3:15 ऐसा ले सकते हैं, आफ्टरनून ले सकते हैं कल। ओके। आप आई विल कंफर्म मैसेज कर, यू। हाँ कंफर्म करके मैसेज भेजें, अदरवाइज आई हैव टू कैरी माई लैपटॉप टू द कॉलेज डेली। ओके। अब मैं अब आप आफ्टरनून में फ्री नहीं है बोलते, मैं फिर लैपटॉप लेके घर को आया क्लास के लिए। ठीक है, विल एंड अप दिस, हाँ।